Hello students, welcome to my channel Sarika Krishna online classes. So in my previous video I explained introduction to trigonometry, right? Now how to apply trigonometry in our real life situations, real life problems, right? So there's a new chapter 9 in class NCERT, that is application of trigonometry. So in this we have some problem sums in the exercise 9.1. So I'm going to explain those problems, right? And I will be using introduction of trigonometry there. We'll be using trigonometry there. In trigonometry, we know that we have to draw a triangle, right? Some two sides are given, or one side is given, one other side is asked, some angle is given, right? So now I'm explaining some questions from NCERT exercise 9.1. So the statements are very big. So I'll just read that question and I'll explain, right? So the first question in exercise 9.1, you can see your book. What is the question there? I'm reading out for you. A circus artist is climbing a rope 20 meters long. This is a rope, right? A circus artist is climbing a rope that is 20 meters long. So this is a rope, right? And which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole, right? This is a pole. This is the height of the pole, and what is this rope? Rope is tied here on the top, right? So the angle which is formed by this rope is 30 degree, right? So now you have to find the height of the pole. So this is the question number 1 of exercise 9.1 NCERT. Okay, now let us solve this. How to find this h? Applying trigonometry. Now here, first of all, we have to see which side we have to find. We'll write AB is equal to h. This we have to find out. And what is given is AC, that is 20 meters. So means perpendicular is given and perpendicular we have to find and hypotenuse is given. So we are having a relation between P and H in terms of sine. So what is sine theta? Well, we know that sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So these two sides are involved. So we'll be using, so if these two sides perpendicular and hypotenuse are involved, we'll be using sine theta. If base and hypotenuse are involved, we'll be using cos theta. If perpendicular and base are involved, we'll be using tangent theta. Here we have to find this perpendicular and hypotenuse we have. So perpendicular and hypotenuse are connected with sine theta. Here we have sine 30 degree, it's given, right? Perpendicular, that is h, suppose h. Hypotenuse is 20. Substitute the value of sine theta, that is 1 by 2. That is h by 20. Just cross. 2 into h is 2h. 20 into 1 is 20. So h will be 20 by 2 and that is 10 meters. So this is h, that is 10 meters. So this was very simple question. We have complicated ones also, right? I hope it's clear. The rope length is 20 meter, height of the pole is h, and perpendicular and hypotenuse, they are connected in sine. So I've taken sine theta here is 30 degree. We know the value of sine 30, that is 1 by 2. H, just cross multiply and find out h. And we were supposed to find out the h only, right? So we'll be doing the next question now. Okay, students, now we'll do the second question of exercise 9.1 NCERT. Right? So I'll read the question. You can see the book. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree, right? So the question is simple. We have a tree. Height of the tree is AC. It has broken from here and this AB part has fallen down. So means AB part is equivalent to BD. This part equals to this because that part have been fallen down. So in order to find the height of the tree, we have to find BC and plus BD because the height of the tree is BC plus AB. AB plus BC. But AB is equivalent to BD. So AC will be equivalent to AB की जगह in place we have to write BD. So BD plus BC. वैसे तो BC plus AB था, AB गिर गया, BD बन गया, right? So height AC will be equivalent to BC plus ये नहीं है हमारे पास, उसके बजाय हम will be using BD. So AC is equal to BC plus BD, right? So now let us apply trigonometry here. Now here we have BC, right? Now what is given? Given is CD and that is base, that is 8 meters. Now we have to find this
and this both. So we need to find this also and we have to find this also. Now let us take these two. When I have to find BC, then I'll be using tangent, right? Because we have base. Base is connected in tangent as well as in cos. अगर आप perpendicular लेते हो तो tangent. So like I'm taking tangent 30 is equal to BC perpendicular upon base. So this is tangent 30. So then tangent 30 value is 1 by root 3 is equal to BC. We don't have, we have CD. Cross multiply, right? So BC will be equals to 8 इधर चला जाएगा, right? और root 3 इसके साथ चला जाएगा. I'm doing directly जो root 3 यहाँ है वो मैं यहाँ लेके आती हूँ. What happens? 8 goes here. तो BC is equal to 8 by root 3. Now you need to rationalize. जब भी आपका root, you have this root in the denominator. You have to rationalize with the same number, right? So that becomes 8 root 3. Root 3 is 3. So this is BC. So AC में हमने क्या डालना है? BC और BD. BC हमारा आ गया. So BC को हम यहाँ रख लेते हैं, right? Now I need to find BD. हमारे पास base है, हमारे को hypotenuse we have to find. तो इन दोनों में connected होता है cos. So let us use cos now. Cos 30 degrees is equal to base upon hypotenuse. Base is 8. Hypotenuse we have to find. And the value of cos 30, that is root 3 by 2. Cross कर लो. Right? So BD will be 8 to the 16 upon root 3. Rationalize कर लो as we did here. So it becomes 16 root 3 upon root 3. Root 3 होता है 3. So this is the value of BD. अब AC height of the tree कैसे निकलेगी? BD plus BC, right? BC आपके पास है, BD आपके पास है. You just have to add them up, right? You just have to add them up. चलो add कर लेते हैं AC. AC is equal to BC plus BD. Okay, they are in fractions. Let us add them up. This way, taking the LCM. LCM हमारा same है 3. 16 और ये 24 होता है 16 8 और root 3 ही रहता है. So 3 cancel हो जाएगा 24 से. So 8 root 3. So what is the height of the tree? That is 8 root 3. We have got the height, right? I'm repeating this question again. There is a tree and tree has broken from this point and it has fallen down. Fallen down means AB is equal into BD. जो हम AB height हमारी AC है वो BC और AB से बनती है. AB वाला part fallen down हो गया तो means हमें जब height AC निकालनी है तो we'll be adding BC plus BD. BC, this is perpendicular and this is base. Base we have to find perpendicular. तो tangent लेते हैं हम. Tangent की help से हमने BC निकाल लिया. जब हमें ये hypotenuse निकालना है and we have the base. Base और hypotenuse cos में connected होता है. Cos लगा लो, 30 डिग्री की वैल्यू डाल दो, you'll get BD. So BD भी आ गया, दोनों fraction में थे. Then in order to find the height of the tree, AC, that is BC plus BD, just add them up, this and this. LCM was same 3 लिख लो. 16 और 8, root and root, right? ये ऐड नहीं होते, इसके आगे के नंबर्स ऐड होते हैं. 16 ये ऐसे है जैसे 8x 16x, x ऐड नहीं होता, x ही रहता है. सो 8x plus 16x 24x. इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली. तो रूट थ्री ही रहता है. जस्ट आप उसके आगे के नंबर्स यू जस्ट ऐड देम अप. 16 8 24 एंड कटिंग हो जाती 3 से 8 root 3. So this is the height of the tree. So this will be solved. Now let us see the next question. Now we'll do question number 3rd and 4th of NCERT, right? So third question is that there is a contractor who wants to make the slides, right? So if the height is 1.5 meter, angle is 30 degree, find out the length of the slide. Slide is this AC. And there is another slide for bigger children of height 3.3 meters, angle is 60 degree, and you have to find the length of the slide. So it's very simple. This is perpendicular and hypotenuse. We have perpendicular, we have to find hypotenuse. Sin लगा लो दोनों में sin लगा लेंगे तो sin 30 होगा. This upon this. This we have value 1.5. AC we have to find, cross कर दो और multiply करके you'll get the answer of AC. यहाँ पे 3 meters आ गया. और जब sin 60 है, sin 60 की value डाल दो, right? DE is 3. DF निकालना है, cross कर लो and you'll get the answer. उसके बाद rationalize कर लो if there is a root in the denominator. So very simple, sign लगा लिया. This question 4 is also very simple, right? I'll read out the question number 4th also. The angle of elevation of the top of a tower
from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Very simple, right? Height of the tower is h. It is 30 meters away and the angle made at this point is 30 degree. Now we have base. We have to find perpendicular, apply tangent, right? Tangent 30 is equal to perpendicular upon base, and that is h upon 30. What is tan 30? That is 1 by root 3. H upon 30, cross kar lo, right? 30 comes here, so h is equal to 30 upon root 3. So whenever we have root in the denominator, just to rationalize that, it becomes 30 root 3, and root 3 is 3, right? So we can cancel this 10. So height of the tower is 10 root 3 meters. So we were supposed to find the height of the tower, right? So very simple. जहाँ पे आपके पास perpendicular है, you have to find the hypotenuse. वहाँ पे sign लगा लो, values डाल दो, cross multiply करके find out the answer, right? And fourth वाले में perpendicular आपको निकालना था height. Base was given, so perpendicular base connected. They are connected with tangent. Tangent 30 डालो, 30 की value डालो, cross multiply करो. अगर denominator में root है, rationalize करो, and you'll get the answer, right? Let us see the next question now. Okay, students, now we will do question number 5th and 6th. So I'll read that question. 5th, a kite is flying at a height of 60 meters. This is a 60-meter height. The kite is flying and the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground and the inclination there is 60 degree. We have to find the length of the string. So this is the string BC, right? And in this question number 6th, I'll read the question. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. There is a 30 meter tall building and a boy at some distance is standing. Boy is standing here from, right, 1.5 meter tall. From his eyes he is looking upwards. So here this distance we consider from here the upper part, right? Now, and the angle of elevation from his eyes, it's specially mentioned there, eyes, to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. Increases matlab, here it's 30 when the boy approaches towards the building, right? The angle becomes 60 degree. So 30 to 60 angle is changed when the boy moves towards the building. And what do we have to find? We have to find the distance he walked towards the building. So distance he walked towards the building is EF. This FE, X. So we have to find, ultimately we have to find here X, right? So now let us do first this question here. Here we know that we have perpendicular and we have to find hypotenuse. Again we have to apply sine. Sine 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is this hypotenuse we don't have. We have to find out. Sine 60 value is root 3 by 2. Here it's 60, here it's BC, cross multiply करो, BC इधर आ जाएगा, 60 into 2, root 3 नीचे आ जाएगा, 120 by root 3. You have a root in the denominator, so you have to rationalize root 3, and root 3. So it becomes 120 root 3, 120 root 3 by 3. So we can cancel this here, 3 4s are 12. So this becomes 40 root 3. So we were supposed to find that BC, length of the string of the kite, that is 40 root 3. So it was direct and simple. Perpendicular was given, hypotenuse we were supposed to find out, angle was 60. So sine use करो because sine में P और H connected होते हैं. Put substitute the value of sine 60, cross multiply करो, rationalizing करो, and you'll get the answer. Now this one is little difficult. Right here what happens? The total height of the building is 30 till the here ground floor, right? The boy is standing here, right? Here he's standing, his eyes. So angle of elevation is from his eyes only, right? So what happens? We have to take the triangle till here only because the boy is looking from here, making an angle 30 degree and then approaching moving towards the building, and then angle changes to 60 degree. Now here we have to find this distance. Boy ने यहाँ से यहाँ तक का distance जो cover किया है, that is x, and that we are supposed to find out. So let this be x and let this be BFY. So here we have to take this triangle and this triangle, means ABF and ABE. So 30 को आप subtract कर लो 1.5 because इतनी height है boy की. So 30 में से when 1.5 when it is subtracted, so AB कितना होता है 28.5 because we have to consider this triangle here.
once this smaller one and the bigger one. So height all will be, in both the cases the height will be AB. So वो 28.5 होगा, क्योंकि height of the boy आपने subtract कर ली, क्योंकि I से angle बना, नीचे bottom से नहीं. Okay now. So there are two triangles, right? So in triangle A, B and F. So whenever you have to solve, you have to mention the triangle. In these questions, there was only one triangle. So, but you should write there also in triangle BAC, right? And in triangle BAC, right? You should write this 90 in the center, right? Now here there are two triangles, so obviously we have to mention them, right? So ABF, B बीच में रखना है जहाँ पे 90 है, right? So in this triangle, what happens? We have perpendicular and we have supposed base. So here let us use tan. Tan 60 is equal to perpendicular, that is 28.5 and not 30, क्योंकि आपने यहीं तक लेना है triangle AB. So that is 28.5. So 28.5 upon 28.5 upon y, right? So tan and 60 क्या होता है, उसकी वैल्यू डाल दो √3, क्रॉस करोगे तो आप y is equal to 28.5 upon √3. y उधर चला गया, √3 नीचे आ गया. अभी हम इसको रैशनलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज इन द लास्ट वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट, राइट? तो अभी इसको यहीं रखते हैं, नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल, नाउ वी आर कंसिडरिंग द ट्रायंगल ABE आगे तक, जिसमें एंगल 30 डिग्री है, राइट? वहां भी हम टैंजेंट यूज करेंगे tan 30, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर तो सेम है 28.5 अपॉन बेस अब BE हो गया, बेस आपका BE हो गया, तो BE की वैल्यू क्या है, दैट इज x प्लस वाई, राइट? सो आपको यहां से लेकर वहां तक बेस है, दैट इज x प्लस वाई, y प्लस x हमने डाल दिया. वी हैव वैल्यू ऑफ y, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हियर, और टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, और यहाँ आ गया 28.5 x प्लस y की वैल्यू फ्रॉम 1 डाल देते हैं यहाँ पे 28.5 अपॉन √3. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा इधर को आ जाएगा, ये √3 उधर चला जाएगा. सो देन व्हाट हैपेंस, ये x प्लस 28.5 √3 लेफ्ट पे आ गया, क्रॉस होकर इधर को आ गया, वो उधर चला गया. 28.5 multiplied by √3, cross multiply, this whole comes here up multiplied with 1. So अब क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट पे, क्योंकि वो लाइक टर्म्स है दोनों. सो x विल बी इक्वल्स टू 28.5 √3 ऑलरेडी राइट में है, ये उधर जाएगा, चेंज होगा साइन, माइनस 28.5 अपॉन √3, यहाँ अपॉन में है, सो हम एलसीएम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? तो यहाँ √3 नहीं है, सो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई दिस बाय √3. सो 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है 3, √3 को आपको मल्टीप्लाई करना, दैट बिकम्स 3, और यहाँ पे आपके पास है 28.5. सो x इज इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो 8 5 3 5 15, राइट? 3 24 25 2 3 6 85.5. सो 28.5 बाय √3. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, यहाँ आपका 57.0. नाउ यू नीड टू रैशनलाइज इट, राइट? 57 by √3 multiply by √3 divide by √3, तो becomes 57. This is 57 √3 by 3. √3 हो गया, और 3 आप कट कर सकते हो, 3 1 are 3, 27 3 9 are 27. So value of x is 19 √3 meters, right? So the distance walked by that child towards the building, E से F तक का distance x, that is 19 √3 meters. So this was very direct, simple. एक ही triangle था और आपके पास connected था P और H, आपने sin लगा लिया. अगर P और B होता तो tan लगाते, अगर B और H होता तो cos लगाते. तो ये तो direct है. So this one is little complicated, right? पहले तो एक boy की height है, बॉय की हाइट आप यहाँ से माइनस करोगे, क्योंकि आईज ऊपर है, आईज से उसने एंगल बनाया है, सो ट्रायंगल भी कंसिडर टिल हियर ओनली. फिर हमने एक ट्रायंगल लिया, उसमें टैंजेंट लगाया, बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें टैंजेंट 30 लगाया, राइट? फर्स्ट वाले से हमने y की वैल्यू निकाली, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकेंड वाले में, क्योंकि उसमें जो बेस था दैट इज y प्लस एक्स, तो वहां पर वो y डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सारा इधर आ गया, ये उधर चला गया. ये लाइक टर्म्स है तो इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड विद अ नेगेटिव साइन. अब फ्रैक्शन है, सो वी आर टेकन द एलसीएम. यहाँ पे नहीं है इसके बाद √3, तो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई, सो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है √3 से. 28.5 √3
3 हो जाता है, फिर 28.9 को 3 से इंटू किया तो ये आ गया, माइनस किया तो ये आ गया, रैशनलाइज किया तो 19.19√3 meters आ गया. So let us do the next question. Okay, now we'll do question number 7th and 8th. I'll read the question because the statements are very big. I can't write. 7th. From a point on the ground, the angles of elevation of the top and the bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60. Find the height of the tower. Now here we have a 20-meter high building. Building is this, BC's building. AB's tower. We have to find the height of the tower. Let it be H, right? And the angles made at the bottom and the top of a tower, they are these two angles, right? Here 45 and 60 degree. Now what about this? I'll read this question also. 8th one. Question is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. So here it's pedestal, here it's a statue, right? And the angle made by the statue 60 degree and from the top. Okay, so this is a statue. Angle made from the bottom, made here at the bottom of the statue is 45 and at the top of the statue is 60 degree. So here we have to find this here height of the pedestal, right? So these were the statements. Now let us do these questions. Here, this one. Here we have to find this tower, height of the tower. We have the height of the building. We have the angles, right? Now the CD, let it be X, right? So in triangle, you have to mention the triangle BCD. In this triangle, small, tan 45 will be equals to 20 perpendicular upon base. Tan 45 is 1. X goes there, so value of X becomes 20 from here, right? So here this is 20. Okay, so we have found the value of X is 20 now here, 20 meters. Now we'll take the big triangle. In triangle ACD, we have to take the right triangle ACD. Now tan 60 degree is equals to, यहाँ तक angle 60 है, so perpendicular here is H plus 20 upon base is X. We have the value of X, we'll be substituting here, we have to substitute value of tan 60. So here tan 60 is √3 H plus 20 upon X is 20 from here, equation 1. So just use that X here, 20, cross multiply, so H plus 20 is equals to 20 √3. So H is equals to 20 √3. 20 goes to that side. So 20 you can take common and √3 minus 1 meters. So this is the height of the tower. I'll repeat this again. We have a building 20 meters. We have a tower on that, above that building, right? So angle made from some point on the ground, angle made at the bottom of the tower is 45 degree and the angle made at the top of the tower is 60 degree. ये top tower का top है, ये tower का bottom है. We have to find the height of the tower. So there are two triangles, right triangles. Here it is 90 degree. BCD and ACD. BCD में tangent 45 लगा लो, वहाँ से x की value 20 आ जाएगी. Then big triangle में tangent 60 लगाना है. Height की जगह h plus 20 use करना है because the total height is AC and that is made by h plus 20. तो height की जगह h plus 20 डालो, base की जगह x डालो, x की value आ चुकी है. So just substitute there value of x. फिर cross करो, एक तरफ ले आओ, right? You'll get the value of h. 20 common था तो common निकाल लो, right? This was question number 7. Now let us do question number 8. 8th में क्या है? इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? एंगल दोनों में 45 और 60 है, 45 60 है. इसमें here नीचे लोअर पार्ट का वैल्यू दी हुई थी, लोअर पार्ट की वैल्यू थी and we were having, and in this question now we are having the value of the upper part, right? So here पेडेस्टल अब ये है आपके पास, पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है. अगेन द सेम वे, इसको x ले लेते हैं. अगेन द टू ट्रायंगल्स, राइट? इन ट्रायंगल BCD, राइट ट्रायंगल है BCD, tan 45 होगा आपका, राइट? h अपॉन x. अब इसमें तो दोनों में से एक वैल्यू है ही नहीं, राइट? सो हम h की वैल्यू निकालते हैं. tan 45 इज 1, तो h इज इक्वल टू x. ये नंबर 1 इक्वेशन होगी, इसको हम यूज कर लेंगे, राइट? नाउ इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, बड़े वाले में tan 60 है, परपेंडिकुलर AC है और बेस CD है, तो AC कैसे बनेगा? 1.6 प्लस x से, दिस प्लस दिस, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है हाइट, x नीचे है, राइट? 1.6 प्लस h, x की जगह पे h डाल लो बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू h, सो वो h में आ जाएगी. और व्हाट इज tangent 60? tangent 60 को हम √3 डाल देते हैं,
tan 60 की वैल्यू. So 1.6 plus h is equal to root 3h. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, राइट. h एक तरफ कर लेते हैं. 1.6 is equal to root 3h. h उधर चला गया, सीधा लिख लेते हैं. Let us write this way, right? So h कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आया, root 3 minus 1, 1.6. Now h निकालने के लिए 1.6 upon root 3 minus 1. अब there is a root in the denominator, just rationalize it. Rationalize करना क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर लिखना होता है, चेंज करना होता है ये साइन बीच का. If there is one term, तब तो हम root 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. If there are two terms, तो बीच का जो साइन है उसको चेंज करते हैं और बाकी डिनोमिनेटर वाला सेम लिखते हैं, root 3 plus 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. Now we'll be getting 1.6 under root 3 plus 1, right? नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a plus b into a minus b. So let us apply that formula. A root 3 square is 3, 1 square is 1. So we are left with 1.6 root 3 plus 1 upon 2. 2 आप इससे कट कर लो, right? 2 के टेबल से कट होगा 0.8. So the final answer is 0.8 root 3 plus 1 meters. ये आपके पास आएगी height of the pedestal, right? So both the questions are of the same type. There are two triangles. इसमें भी smaller लिया, उससे x निकाला, फिर बड़े में उस x की वैल्यू डाल दी. इसमें क्या किया, smaller लिया, उसमें x की वैल्यू नहीं थी, but tangent 45 था, tangent 45 is 1. So h and x they were equal. So when we took tangent 60 from the bigger triangle, उसमें जो perpendicular था 1.6 plus h आ गया, उसमें जो base है, we just substituted that base here. In place of x हमने h डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h एक तरफ कर दिया, रैशनलाइजिंग कर दी, और कटिंग अगर होती है तो you have to simplify into simplest form. I hope these two questions are clear. So now the next question. We'll be doing question number 9th and 10th. First I'll read the question, the statement. Question 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building, right? So this is the height of the tower and this is the height of the building, right? So the angle which is made from the foot of the tower to the height of top of the building is 30 degree, and from the foot of the building to the top of the tower, that is 60 degree. So this is the figure. Now question number 10th. Two poles of equal heights are standing on opposite side of each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation at the top of the poles are 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles, right? So the question is that there are two poles of equal height, h and h, right? So this is a road 80 meters broad, and at a point somewhere in between that road, the point at the road, one angle is made as the angle which is made from the two top of the same height of the poles, that is 30 degree and 60 degree, right? So the two angles made from the top of the poles at that point are 30 and 60. So here if it is total 80, like BOB x and ODB 80 minus x. When we'll be able to find x, हम 80 minus x भी निकाल लेंगे and we'll be able to find. So there are two triangles, so we'll mention the triangles here. So here first let us do this 9th one. In triangle DCB, this is 90 here, this is also 90 here, right? DCB, what we have? We have tangent 60, that is equal to perpendicular upon base. Let it be x, right? We are not going to write BC or CB, let it be x. Okay, tan 60 is root 3. So here x will go there, root 3 will come down. So this is the value of x which we'll be using in the other equation. Okay, now in triangle ABC. ABC जो है ये वाला है जहाँ पे building आती है आपकी height. So tan 30 we are having. So height is h and the base is x. Tan 30 is 1 by root 3, right? When we cross this to that side, x upon root 3. So what is x? We have the value of x here, 50 upon root 3 upon root 3. So that becomes 50 upon root 3. Root 3 is 3. So height of that building, that is AB, is 50 by 3 meters, right? So this was simple. From here, apply tan 60 perpendicular upon base, find out the value of x. From here, tan 30,
h upon x. Substitute the value of x, you will be able to find the value of h. Now here also we have two triangles, so we'll be considering first triangle A. These here are right triangles ABO. In triangle ABO we have tangent 60 degree. Same tangent 60 है आपका, होता है perpendicular upon base, perpendicular h है, base x लिया मैंने, tangent 60 is √3. So यहाँ से क्या हुआ, h is equal to √3 into x. We'll be using this, right? So now in triangle CDO, tan 30 है आपके पास, वहाँ एंगल 30 डिग्री है, perpendicular आपका ये है, बेस आपका ये है, राइट? tan 30 होता है 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर चला जाएगा 80 - x upon √3, right? Then you have, so we have two equations, here also h, here also h. Let us equate 1 and 2, right? Or substitute value of h here as you wish. So if we'll be equating them, this h and this h, so we can find out x, right? Cross multiply कर लो, √3 हो जाएगा 3x, right? x comes to left side, ये x आपका लेफ्ट पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, this becomes this, right? √3 into √3 ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, that is 3. x आपका नेगेटिव में था, राइट साइड वो लेफ्ट पे आ गया पॉजिटिव, तो 4x is equal to 80, equals to 80/4, and that is equals to 20. जो आपका x है, x यहाँ पे क्या है, BO, that is 20. तो आपका 80 - x क्या होगा, that is OD, वो होगा 60. 80 - 20 वो आपके पास 60 होगा. So one answer is this, one answer is this. तो ये आपका 20 आया, ये आपका 60 आया. Now you have to find h. h में वैल्यू में डाल लो. What is h here? h is √3 into x. So what is x? x was 20. So √3 into 20. So that is 20 √3. Meters लगा लो. Meters, right? If it is in meters, it is mentioned here meters, then right, meters. So I hope these two questions are clear. 9th and 10th. 9th में क्या था, दो triangles थे, first में से tangent में से 60 लगा के we found x base, उसी base को हमने इस side use कर लिया, उसका value substitute करके we found the height. Now here also, right, height दोनों की same है, एक बार h निकल गया तो दोनों की same है, right? So एक triangle लिया, tangent 60 लगाया, वहाँ से हमने we found that h is equal to this much, right? वहाँ से भी हमने h निकाला क्योंकि h दोनों के सेम है, तो इक्वेट कर लो और h की वैल्यू डालो, यहाँ डाल दो √3x, वो इधर आ जाएगा, that also becomes the same. √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3, x इधर आएगा तो 4x, x निकाल लो, x आ गया तो ये निकाल लो 60, फिर x की वैल्यू h में डाल लो तो you'll get h also, right? So we have done the question number 10. Now the next question, students. I'll be explaining question number 11th and 12th. So let me read the question. Question number 11th. Figure has been given in the book, right? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal, right? So here the two angles made from the 2 points on the canal, right? They are this 30 and 60. So we have to find this width as well as the height. So now question number 12. From the top of a 7 meter high building, this is a building. From the top of this building to the top of the tower, first I'll read. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. Right? And the angle of depression is 45. Determine the height of the tower, right? This is a building. From here to the top of the tower, angle is 60 degree. And depression is downwards, right? Like here, watching from here downwards, the angle made here with the horizontal line is 45. So here, alternate angles are formed. If this is 45, this is 45. So we write here 45. So angle of depression is made downwards, angle of elevation is upwards, right? यहाँ से देखा नीचे को तो that is depression. ये vertical line होती है. Upward देखा तो there should be a vertical line there, right? So that is 60 degree. So let me solve this. Question number 11, right? We want x and h. So there are two triangles in triangle smaller one ABC. उसमें tan 60 है. tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 क्या होता है, √3. क्रॉस करेंगे तो x वहां जाएगा √3x. So same type of questions, right?
सो फ्रॉम सेकेंड इन ट्राइंगल ABD आपका बड़ा ट्राइंगल है, राइट, उसमें भी टेंजेंट है लेकिन 30 डिग्री है, हाइट इज द सेम, बेस आपके दो हैं 20 प्लस x, बेस आपका BD है दैट इज फॉर्म बाय 20 प्लस x, सो आपको दो पार्ट्स में लिखना है, राइट. सो हियर टेंजेंट 30 इज 1/√3. व्हेन यू cross multiply this part to that side, so it becomes 20 plus x goes to the right side on 3, right. So we have here also h, here also h, either you substitute value of h here or equate as you wish, right. So if we, I'll substitute here this √3x, इस साइड substitute कर लेती हूँ, no problem, right. ये x की वैल्यू हमने यहाँ डाली तो this will be here this way, ये 3 उधर जाएगा तो √3 into √3 is 3, 3x में से 1x माइनस हुआ 2x, that will be 20, x आपका आ जाएगा 10. So if x is 10, so what is h? h आपका है from first equation √3 into x. x आपका 10 आया तो substitute x 10, so you'll get this also. Then put there meters if it's written, right? So in question number 11 हमने क्या करना था? We were supposed to find this x and h, right? So इस triangle में से दोनों unknown थे, so हमने h निकाले in terms of x. बिगर ट्राइंगल में टेंजेंट 30 होगा, परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस, बेस यहाँ पे 2 है, BD जो है दैट इज फॉर्म बाय BC प्लस CD, x प्लस 20. आपके पास जब दो पार्ट्स में होता है कोई साइड तो यू जस्ट हैव टू राइट x प्लस 20 देयर, ठीक है. और टेंजेंट 30 इज 1/√3, क्रॉस कर लो h आ जाएगा, h में वैल्यू यहाँ से डाल दो, x की वैल्यू डाल दो या h को इक्वेट कर दो, व्हाटएवर, राइट. यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x आपका क्या है? ये विड्थ. देन हाइट में डाल दो उस x की वैल्यू 10, यहाँ 10 डाला √3 10, दैट इज 10√3. सो यू हैव गॉट द width also and the height also, right. Now here in this question एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप से टावर को देखें अपवर्ड्स दैट इज 60 डिग्री, अगर नीचे को उसके फुट को देखें दैट इज डिप्रेशन 45. अगर यहाँ 45 है जहाँ पे z बनता है, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं 45 45, पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे z बनता है, they are called alternate angles, right. So अगर ऊपर 45 है तो नीचे 45 होगा. यहाँ again we have let this is 7, so इतना पोर्शन 7 होगा, पैरेलल है, राइट. ये x है, जितना ये x होगा उतना ये भी होगा. यहाँ पे AD, BC और AD सेम है, आई राइट हियर AD इज इक्वल टू BC, राइट. और अगर आपके पास यहाँ DC है वो AB के इक्वल होगा जो कि 7 है, 7 इतना है, इतना पोर्शन 7 आपके पास होगा. This is 7, this is 7, right. This is if I have supposed x तो ये भी x होगा. जब यहाँ की वैल्यू BC की आ जाएगी so that will be equal to AD, right. आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है EC, the height of the tower, ऊपर से नीचे तक. वो EC कैसे बनेगा? y प्लस 7 से, क्योंकि 7 का तो आपको पता चल गया कितना 7 है, आपको y निकालना है, राइट. सो वी हैव टू ट्राइंगल्स, वन दिस वन एंड दिस वन, सो वो उसमें लगाओ. So in triangle ABC, that is right triangle, this is also right triangle, ABC में again the same thing, perpendicular और BC आ रहे हैं, mostly tangent आ रहा है, tan 45, that will be perpendicular upon base. You can write first AB upon BC, I'm writing directly, tan 45 is 1, so x की value 7 आ गई, number 1, ये x आपका 7 आ गया. It was not given, हमने निकाला. अगर ये 7 आ गया BC तो AD भी 7 हो जाएगा, ये यहाँ 7 आ गया, राइट. सो नाउ इन ट्राइंगल, अब अपर ट्राइंगल देखते हैं, EDA, राइट, दैट इज राइट ट्राइंगल. उसमें tan 60 है, tan 60 कितने, राइट. इन दिस ट्राइंगल tan 60 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज y एंड बेस जो कि AD था अब 7 हो चुका है. ओके, वी हैव फाउंड दैट वैल्यू. सो यहाँ पे tan 60 क्या होता है? √3, ये क्रॉस हो जाएगा, सो y आपके पास आएगा 7√3, राइट. सो यू आर सपोज टू व्हाट, यू आर सपोज टू फाइंड EC. EC आपने निकालना है. EC मैंने यहाँ बता दिया था कैसे बनेगा, y प्लस 7 से, y आपका आ गया 7√3 प्लस 7, सो EC आपका हो जाएगा 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर्स, राइट. हाँ मीटर्स लिखा है उन्होंने, अगर मीटर्स नहीं लिखा तो आप यूनिट्स लिख लो, राइट. So this is the answer of this height of the tower EC. I hope it's clear. Let me repeat this one again. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ है, टावर यहाँ है, राइट. इसके यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से ऊपर को एलिवेशन बनता है टावर के टॉप को, तो ये 60 डिग्री है. अगर डिप्रेशन बोला तो यहीं से नीचे को उसके फुट को देखना है
ये डिप्रेशन 45 है। अब हम यहाँ की ट्रायंगल तो नहीं लेंगे, लेट अस ऑल्टरनेट यहाँ ले लेते हैं, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिया, राइट। ये वाले में भी सिंपल था, छोटे ट्रायंगल से निकाला h, बड़े से भी निकाला h, उनको इक्वेट कर दो, यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now students, I'll explain question number 13th and 14th. 13th में, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depressions of two ships are given 30 and 45. So from here the depressions are downwards. So here 30 will be this and 45 is this, because 30 is the smaller angle, 45 is greater angle. So alternate angles here it will be 30 and this will be 45. Then here we have to find CD, this the distance between the two ships. There are ships here, ship 1, ship 2, right? Angle of depressions formed from the height of that lighthouse, right? They are 30 and 45. Okay. Now the next one is, we have two balloons here, right? There is a girl, right? Height of the girl is 1.2 meters. So the girl is looking from here, from the eye level. So the angles made here was 30 degree, then the balloon came here and became 60 degree. Now we are supposed to find this height of the, distance between the balloon, the distance traveled by the balloon. Balloon was here, then it traveled till here. So we are supposed to find this BC, right? So now here, यहाँ पर total this height is 88.2. आपको 1.2 subtract करना है, तो आपका अंदर वाली height आएगी 87 meters, right? Okay. Now let us do number 13. Let us start this question. We have two triangles, smaller one and the bigger one. एक बड़ा triangle, एक छोटा है. So in triangle, पहले हम small वाला ले लेते हैं. ABC, ये small triangle है. इसमें tan 45 है, perpendicular upon base. Base मैंने यहाँ पे y लिख लिया है, right? So tan 45 is 1. It is clear that y will be 75 meters. Equation 1. अभी meters नहीं लिखते हैं, right? So value of y is 75. Okay, now let us take bigger triangle. In triangle ABD, right? ABD में tangent 30 है हमारे पास, right? Perpendicular is same. Base आपके पास बनेगा y plus x से, right? So here y already we have found 75. Let us substitute this, right? Tan 30 होता है 1/√3 this way, right? Cross करेंगे, 75 plus x left पे आएगा, 75√3 multiply होगा right में, right? So this way these are the like terms. I'll shift to the right, 75. So आपकी value x की आएगी 75, आप common ले लो, √3 - 1 meters last में लगाओ. So we were supposed to find this x, that is CD. So √3 - 1 meters. So here I'm going to repeat this again, right? इसमें क्या है, दो ships हैं, ये light house है. Light house के top से अगर देखते हैं तो on the ship, दो ships पे angle of depressions बनते हैं. When we look from the top towards the bottom, so ये depressions है. जो ये होगा alternate, वो ये होगा, जो ये होगा यहाँ तक ये angle होगा same, 45 alternate angles, जहाँ पे आपको z बनेगा. So after that, in this triangle, apply tan 45, right? Tan 45 is 1. You will be able to find the value of y. Similarly, बड़े वाला triangle जब हम लेते हैं तो उसमें भी tan है 30, perpendicular है, base आप x plus y ले लो, y की value डाल लो and cross multiply करके solve कर लो, right? Now in this question, गर्ल है, गर्ल इज वॉचिंग टू बलून. पहले बलून यहाँ था, फिर बलून आके यहाँ पहुंच गया. सो दो डिफरेंट एंगल्स बन गए गर्ल की आई से. अब ये टोटल हाइट जो ग्राउंड तक थी, दैट इज बलून की 88.2, राइट? सो नाउ हियर गर्ल वाज वाचिंग फ्रॉम द आई, सो वो हाइट हमको माइनस करनी पड़ती है. तो टिल हियर विल बी कंसिडरिंग ट्रायंगल फ्रॉम टिल हियर हाइट AB 87, राइट? यहाँ भी दो ट्रायंगल्स है. सो इन ट्रायंगल, पहले इधर वाला ले लेते हैं, दिस वन. In triangle E, ये भी राइट है, ECD और ये भी राइट है, राइट? ECD is this here. Here it's tan 60, तो tan 60 ले लो. परपेंडिकुलर है ये, that is 87. बेस है आपके पास, बेस में लिख देती हूँ x और y, right? Here the base is x, right? So tan 60 is √3. आपने क्रॉस किया, so x √3 is equal to 87. x is equal to 87/√3. आपको रैशनलाइज करना है, यही कर लेते हैं, बाद में भी कर सकते हैं कंबाइन, एज यू विश. 87√3/3, √3 is 3, ये कटिंग हो जाती है. 3 2 6, 27, 3 9 27, राइट? ये आ गई वैल्यू ऑफ x.
Okay, now let us take the second triangle. In triangle अब आप लेंगे ABD. ABD ये भी राइट ट्राइंगल है, इसमें टेंजेंट 30 है आपके पास, राइट. परपेंडिकुलर इसमें क्या है 87. बेस आपके पास क्या है BD x प्लस वाई, राइट. अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे. tan 30 होता है 1/√3. सो 87 अपॉन x की वैल्यू डाल दो 29√3 यही डालनी है. बाय क्रॉस कर लो. This comes here, this goes there. So here this goes that side. तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, right, is equal to 87√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. और y निकालने के लिए 87√3 में से 29 उधर जाएगा, राइट. तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और √3 ही रहेगा. आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 minus 9 is 8, 7 minus 2 is 5, so 58√3 meters, राइट. सो y जो था ये डिस्टेंस था जितना बलून ने ट्रैवल किया. बलून पहले यहाँ था, फिर बलून जस्ट केम हियर, सो ये डिस्टेंस कितना होगा इसके इक्विवेलेंट. सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून दैट इज 58√3 meters, राइट. क्या किया, आई एम गोइंग टू रिपीट. एक ये ट्राइंगल है दिस वन, इसमें tan 60 है, परपेंडिकुलर है, बेस है, वहां से x आ गया. फिर देन दिस बिगर ट्राइंगल tan 30 है क्योंकि उस तरफ को एंगल 30 है, हाइट ये है, बेस आपका x प्लस वाई है. आपने सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू डाल के क्रॉस वगैरह करके एक तरफ करके आप यू कैन फाइंड आउट y, राइट. सो 13 में भी तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस थे. तो एक लाइट हाउस था, दो शिप्स थी एक ही साइड पे थी और शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था. वहां पे भी दो, वी जस्ट यूज्ड टू ट्रायंगल्स, राइट. सो इन एवरी क्वेश्चन इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स इन वन ट्रायंगल से हम कुछ निकालते हैं. मोस्टली वी आर यूजिंग टेंजेंट क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है मोस्टली, हाइपोटेनस ज्यादा है नहीं है, वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में थे. So, एक ट्रायंगल में से टेंजेंट की एंगल यूज करके जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, कोई एक अननोन की वैल्यू निकल जाती है और दूसरे ट्रायंगल में वो अननोन की वैल्यू डल जाती है x की या y की. सो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. टू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट. ओके, now last two questions are left. Question number 15 and 16 of this exercise and in this chapter, right. Question 15. A straight highway leads to the foot of the tower, right. A straight highway leads to the foot of the tower. This is a tower, right. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, then which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, right. 6 seconds later means a person observes a car at an angle of depression 30 degree, right. 6 seconds later जब ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई D से C, the car has reached from D to C, that time is 6 seconds. I've written in 6 seconds. Let the distance be y, right. Now after 6 seconds the angle of depression is 60 degree, that is the 60, right. Now we have to find this time taken by the car to reach the foot of the hill. Let me read it. Now find the time taken by the car to reach the foot of the tower. Yeah, right. So the car यहाँ से यहाँ पहुंची 6 seconds में, angle यहाँ change हो गया. अब now you have to find the car, the time in which the car reaches from this point C to foot of the tower, right. Now the last question here is 16. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters, right, at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meters. Okay, let the height of the tower be this, right. Now here the 2 points have been given, BC or this BD, right. Angles are complementary. Complementary angles means sum of the two angles is 90 degree. Means this plus this is 90. So if one angle is theta, other has to be 90 minus theta. Complementary means 90 होता है total. जब आपके पास total एक अगर theta है तो दूसरा 90 minus theta. आपको prove करना है कि that h is 6 meters. ये proving वाला question है. Now let us do this question number 15th. Okay. Now here, let this distance be x, this be y. Again the same process. In triangle ABC, we have tan 60 degree, that is equal to, let it be h. So h upon x, height upon base. So 60 is √3, so h will be equals to √3 into x. Number 1, we'll be using this, right, as we did earlier. So now in triangle, we'll change the triangle now ABD. उसमें क्या है आपके पास tan 30 है, राइट. परपेंडिकुलर वही रहेगा h. बेस आपका BD है. BD is formed by x plus y. Now tan 30 is 1/√3 और h upon x plus y. आप h निकाल लो यहाँ से.
सो h आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन रूट थ्री, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया क्रॉस होके। नंबर 2, अब 1 और 2 में h है, लेट अस इक्वेट। सो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट थ्री, हियर रूट थ्री यहाँ आ जाएगा, रूट थ्री 3 होता है, सो 3x, और उधर से x इधर लेफ्ट पे आ जाएगा तो आपका ये आ जाएगा y, राइट। सो नाउ हियर इट इज 2x, so 2x is equal to y and x is equal to y by 2 means जो x डिस्टेंस है वो y का हाफ है। so अगर y का डिस्टेंस, y का टाइम जो है 6 सेकेंड्स है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसका हाफ है, तो टाइम भी हाफ होना चाहिए। सो टाइम of BC is equal to 3 seconds, right? So here you have to find the distance or relation between the distance here, right? So from here we have proved that x is equal to y by 2, x is equals to y upon 2 means जो x distance है वो y का half है, x upon y by 2, right? So here क्या शो करता है, अगर आपका टाइम भी है, बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर आपका ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा टाइम लगता है, कम डिस्टेंस है तो कम टाइम लगता है। तो अगर आपके पास टाइम इसका y का 6 सेकेंड्स है तो x का कितना होगा, हाफ, 3 seconds, so x is equal to 3 seconds this way, right? So I'll repeat this question. From this triangle we apply tan 60 h upon x, x ने h निकाल लिया, बड़े वाले ट्राइंगल से tan 30 था, h अपॉन x प्लस वाई, राइट, वहां से दोनों में से h निकाल के इक्वेट कर दिया, ये नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही h थे तो राइट साइड इक्वेट कर दी, रूट थ्री एक्स और ये दोनों इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी केम टू द कंक्लूजन दैट x इज इक्वल टू वाई बाई 2 मीन्स उसका डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ होगा, x y का टाइम हमारे पास था 6 by 2 टाइम हाफ होगा 3 seconds. Now this question, now here also we have two triangles, in triangle ABC, it is right triangle, right? We'll write tangent theta, that is h upon 4, number 1. So here from triangle, in triangle ABD, tan आपके पास है 90 minus theta और वैल्यू होगी perpendicular upon base, base आपको 9 दिया हुआ है, right? So here number 2 we will multiply, right? multiply equation 1 and 2, आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो और हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? सो जस्ट लेट अस मल्टीप्लाई एंड सी व्हाट वी गेट, h upon 4 into h upon 9. Now tan theta remains as it is. From complementary angles I told tangent 90 minus theta is cot theta, so आप cot में चेंज कर लो, h into h is h square, 4 9s are 36, right? So tan theta, and what is cot theta, reciprocal of tan, h square upon 36, तो tan tan कट गया, 1 आ गया, 36 इस साइड आ गया, h square is equal to 36, h is equal to plus minus 6. अब क्योंकि ये हाइट है तो हाइट नेगेटिव में नहीं होती है, सो नेगेटिव वाला आप रिजेक्ट कर लो, आंसर विल बी 6 meters. Height cannot be in negatives, right? So we have proved that the height is 6 meters. So it was also very simple, right? From the first triangle, find from this, right? From the second also you just form this, multiply both of them, right? Both equations. This ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉट होता है, 90 माइनस पे tan changes to cot, sin changes to cos, cosecant secant, tan और cot, तो कॉट हो गया, और कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan tan कट गया, 36 है, यू फाउंड द वैल्यू ऑफ h, तो ये h आ गया, और यहाँ से आपने टाइम का निकाल दिया था, ठीक है? टाइम का हमारे वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, बट आप डिस्टेंस निकाल लो, अगर डिस्टेंस उसका हाफ है तो टाइम भी उसका हाफ लगेगा, अगर यहाँ का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से हाफ है तो टाइम भी यहाँ का हाफ होगा, अगर यहाँ 6 seconds है तो वहाँ 3 seconds लगेंगे, राइट? सो आई एम डन विद दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज 9.1. देयर वाज ओनली वन एक्सरसाइज, आई हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो प्लीज चिल्ड्रन like and share my videos and to subscribe my channel if you have not subscribed. Okay, thank you children, stay blessed.